Ji, Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing really well. This is your host Sabah and this is my co-host Akasha. And today we'll be in conversation with Mr. Sir Syed Azfar Hussain Sahab, the project director of NIC Hyderabad. So let's welcome him, and today's conversation is going to be very, very interesting. So please stay tuned till the end. Assalamu alaikum sir, kya haal hai aapka? ठीक ठाक खैरियत से. Thank you Sabah, and thank you Akasha and the entire team of Startup Insider. Good to have this interaction. अच्छा लग रहा है बहुत, and thank you. You're welcome. So सबसे पहले तो हम आपको congratulate करना चाहेंगे on being part of such a great initiative. It's great to see NIC covering even more cities in Pakistan. Excellent initiative. So the first question that I'd like to ask you is basically अपने आप को थोड़ा सा introduce कराएं, how you became a part of this initiative, and then also what exactly is NIC Hyderabad? What are you planning to do with it? Great, interesting. So I was born in Hyderabad. And when I was 6 years old, my family, like most of the families in Hyderabad, they decided to shift to Karachi. और जब मैं कहता हूँ most of the family, it's just that the opportunity in the city, which is considered, it is the second largest city of the province of Sindh, but it doesn't have this enough opportunities नहीं है लोगों के पास. लोगों को आगे जानना है, बढ़ना होता है, तो obviously एक natural progression होता है towards a bigger city, and Karachi is the largest city of Pakistan. So and my entire education is from Karachi. My experience, all corporate experience is Karachi based. और ये मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि I'm one of the कहना चाहिए कि I'm the oldest person in the ecosystem in terms of the experience. And starting with the NIC Hyderabad, this will be my third incubator. I was in the launching team of the ICCBS Incubation Center, which is led by Dr. Azfar Hussain. Then as program manager of the NIC Karachi, I almost at the very start, I was part of the initial team of NIC Karachi. अभी तक जब तक मेरी appointment हुई है as project director of NIC Hyderabad. So in incubation space में मुझे more than 6-7 years हो गए, and I have really seen this overall ecosystem grow in Pakistan, and with other incubators also coming in, I see a lot of opportunities for startups, and especially people from other cities as well. It's not just a KLI factor where you have the entire focus is on Karachi, Lahore and Islamabad, but it's beyond the KLI, and it's now मैं उनको यूज नहीं करूंगा ये टर्म, मुझे अच्छा नहीं लगता, second tier cities, but obviously other parts of Pakistan as well where there's a lot of scope and potential. And just to give you an example, for instance, even मैं हैदराबाद में पैदा हुआ हूँ और मैं हैदराबाद में I have family there, but जो connect नहीं होता तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती. हैदराबाद still has one of the largest, it's the base of one of the largest freelancers in the country, right? In terms of, yes. And then it's not just famous for the Bombay bakery cake. Mm-hmm. It is a hub, or it's a home to most of the locally assembled motorcycles in Pakistan. So it has an industrial base as well. Some of the leading manufacturing companies have their factories near Hyderabad, which is the Nooriabad area. So coming back to the incubation front, I think so it's very exciting. The NIC family, or the National Incubation Center family, will be in Hyderabad. So after the 5 NIC, after the success of these 5 NICs, it's good to have NIC in Hyderabad, and then following it up with Faisalabad and aerospace and other plans of Ignite. So really excited to start my journey. One, it's kind of a homecoming to me in terms of going back to my home ground or my place of birth, but at the same time it's an opportunity to really find talent there in Hyderabad. Inshallah, and we're sure that you will. Inshallah, it will go great. Sure. So sir, आप ये बता सकते हैं कि आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट कैसे किया, एंड हाउ इज द आइडिया जनरेटेड, और अगर आप हमें कुछ स्नीक पीक दे दें कि आपकी लॉन्च प्रिपरेशंस कैसे जा रही हैं.
Okay, great. So, Joe, all the NICs are public-private partnership, right? So they are. The idea is basically conceived by the Ignite, which is our funding body as well. Ignite is the National Technology Fund, which is a Ministry of IT companies backed by the Federal Ministry of IT. So idea is obviously at the Ignite level, and we are very grateful that we have a funding body like Ignite, since I've worked with them in my capacity as program manager in Karachi. So I know that it's a very committed bunch at the helm of Ignite, and they are very in terms of pro innovation and pro technology. So that's why the idea is from the ministry level and from the Ignite level. But yes, this entire bid, which is won by LMKT PTCL. It's the management of PTCL and LMKT that is behind the entire preparation and the launch and the real you can say the power behind this running of affairs at the NIC Hyderabad, and how we will inshallah be one of the best incubation centers in Pakistan. So it's the launch is near. Can't share the date because it's not finalized, but it's very soon. It's in few days time, and it has really you can say it has really sparked the enthusiasm of the local startup community in Hyderabad. And every day we have meetings with budding entrepreneurs coming and visiting us, visiting our office. Our application date is I don't know when this interview will be aired, but our application date is will end at 8th of July, so it's tomorrow, and we have received a good number of applications as well. So the preparation is great. We'll have the entire NIC team, the team that will be that's my team or the NIC team, and inshallah they'll be also very upfront and vocal about the entire initiative. So we are good with startups coming to NIC. We are very good in terms of the ecosystem development, and we are good with the infrastructure development as well. So the facility is almost ready and up and coming. So inshallah in few days time we'll have some great activity in Hyderabad. That's excellent. इंशाल्लाह. सो अच्छा सर, जैसे आपने बात की अभी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स में अभी लॉन्च चल रही है, राइट? तो इस तरह से मुझे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हमें बताएं एंड सम लॉन्ग टर्म गोल्स एज वेल इन रिगार्ड्स टू NIC Hyderabad. What are your future plans? Okay, great. So it's essentially a 5-year project, and then ministry decides whether to extend it or to give it to another party or go into a rebid. But essentially, we know that it's a 5-year project, and then we plan accordingly. We plan day to day, week to week, month to month, quarter to quarter, and then obviously the year and 5 years. So my immediate goal is to find the best startups in Hyderabad to develop this ecosystem. Obviously, we are positive, we are optimistic, but at the same time we are realists as well. We are realistic because we know that of the ecosystems in Karachi, Lahore, and Islamabad are developed. They have better corporations and business functions surrounding those incubators or the ecosystem by and large. And then obviously they have this advantage of being big cities with more facilities and resources. So at the very basic level, what we really want as a short-term, medium-term goal is to really gather and rally the right people around us. Right. So it is obviously a long-term goal as well, because we want to be the tech or the incubation hub of Hyderabad. But currently, what's in our mind is, and since we are recruiting or inducting our first cohort, we really want the best of the talent to be around us, and best of the tech talent to we should meet them, greet them. We are involved in some of the outreach activities as well. We are going to universities, we are going to different institutes as well. We are meeting business leaders as well. We organized a tech meetup as well, where there were
guests from the freelancing community as well as government dignitaries and the local tech ecosystem space. So sorry to cut you. Just yeah. a question that came to my head. So basically about the startups and the selection process. As you know, quality matters a lot more than quantity, right? So how do you, what importance do you place in this? कि आपको क्या लगता है कितनी अहमियत है इस बात की कि आप उसकी quality ensure करें? You know. जी तो और the more reason है since we are inducting our first cohort and this will be a stepping stone for us obviously. अगर आप शुरू में अच्छे स्टार्टअप्स लेते हैं तो वही अट्रैक्ट करते हैं. It's easier to find new talent when you already have a good bunch. लोग आते हैं आपके पास. हर इंस्टीट्यूशन में यही होता है कि अगर एक आप शुरू में फाउंडेशन अच्छी होती है तो फिर उसकी बेस अच्छी बनती जाती है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ अच्छा काम हो रहा होगा तो हमें इनसे एफिलिएट होना चाहिए. इसका आई थिंक सो जो फंडामेंटल 2-3 चीजें होती हैं. आइडियाज तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अच्छे आए लेकिन इट्स द फाउंडर दैट रन्स द कंपनी. मेरा ये मानना है और मेरा ये एक्सपीरियंस है 6-7 साल में इंक्यूबेशन में working directly and indirectly with over 200 companies and startups. I know for sure that if the founder is of good quality, he or she, they have the right vision as well as the grit and the real hunger to deliver and to have the best of the company in the region and obviously global approach. So these founders, if we have the right founders, we can obviously help them, facilitate them, enable them to become better companies. But to start with, we need to have good founders, mature founders, founders that are focused. We don't want part-timers who are probably not interested to work full-time on their startups. So we are really focusing on the founder quality. And once we have the best founders with the right ideas, that's the job of an incubator and an accelerator to enable them and help them to really grow and facilitate them in the right environment. So finding serious, focused, full-time, technology-driven future with a free mind and futuristic outlook while founders is what we really want as a founder quality. I know it's a tough ask, especially when you're starting something new, but the numbers of entries and the interaction so far, I'm not over optimistic, or I don't want to jump the gun and really brag about it. But I think so we have a good quality of founders that will be joining our first cohort. So it will be a good bunch. It will have a mix of youth and experience, as well as we'll have some good diversity in terms of few female founders as well joining us. I would ideally want a 50-50 ratio, right. But we'll manage to have some real good founders in our cohort. So that's what the plan is. Okay, perfect. अच्छा सर, तो which companies are you currently partner with or you plan on partnering with, and how do they contribute to this initiative? देखिए, so एक चीज बड़ी बेसिक होती है कि it's a PTCL-LMKT led initiative, ठीक है ना, और हम Ignite और मिनिस्ट्री ऑफ IT हमें फंड कर रहा है. लेकिन जो इंक्यूबेशन सेंटर्स बनते हैं ना, इन सारों को एक कम्युनिटी सेंटर की तरह भी रन करना हो. वी शुड बी वेरी ओपन विद पार्टनरशिप्स. हमारा तो इस वक्त ये जो हम जिस तरह इसको अप्रोच कर रहे हैं, वी रियली वांट कि हम सारे स्टेक होल्डर्स से बात करें. और जब मैं सारे स्टेक होल्डर्स और सारी कंपनीज कह रहा हूँ, तो ये टेक एंड बियॉन्ड है. वी वांट functionaries like the State Bank, the SECP, the FBR, and since we are based in Sindh, the Sindh Revenue Board, for instance. We really want to involve all the major universities and institutes, not only in Hyderabad, but in the surrounding areas, as well as
as Karachi, and why not in other parts of Pakistan. We are already in talks with few of the accelerators globally. We really want to build this partnership of global exchange with some of the accelerators. We might have an announcement soon with one of the accelerators based in the Middle East. Then we really want to work with corporate innovation. Corporate innovation पे काम कम हो रहा है. बहुत leading conglomerates और corporations हैं जो चाहती हैं कि उनके solutions startups बनाएं. हम लोग जो हैं वो अपने startups को pitch तो करते हैं, लेकिन शायद हमें इस level पे भी बढ़ाना है अपने आप को कि we can solve big industry issues through our startups. This matching एक होनी चाहिए between corporations, leading industries and startups, ताकि startups ही innovative solutions दें industry को, and with that वो खुद grow हों. और ये ऐसा हुआ भी है, लेकिन ये ज़्यादा होना चाहिए. So उकाशा, आपके question के जवाब यही है कि we are open with partnerships to the entire community. We would love to have interactions with not just big technology companies, but with government and other stakeholders, any other leading organizations, and be it MNCs or local companies or the joint conglomerates. We really want to work with them. हमारा तो एम है कि हमने सबसे बात करनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट से बात करनी है. सो हमने सबसे बात करनी है, हमने ओपन कम्युनिटी रखनी है, क्योंकि हमें अभी लगता है कि इस वक्त जो है ना, हम जहां जहां से स्ट्रेंथ ले सकते हैं और जहां जहां से हम अपने आप को ये बता सकते हैं कि क्यों ये स्टार्टअप्स इंपॉर्टेंट हैं एंड व्हाई आर दे गिविंग यू इनोवेटिव सॉल्यूशंस, हम वहां उन सबसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं. हम तो मीडिया और आप लोगों से भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं. ये तो बहुत अच्छी बात है. तो सर ये बताएं कि कोई करिकुलम है जो आप स्टार्टअप्स के लिए कैसे करिकुलम फॉलो करते हैं और करने का प्लान रखते हैं, और कोई इंटरनेशनल रिसर्च पे बेस्ड है आपका मॉडल, जैसे सिलिकॉन वैली है या यूके है, या इस तरह से कोई या किस तरह से आपने अपना बिजनेस मॉडल वो किया है? So since some of your viewers and readers might be aware that the LMKT runs NIC Karachi and Peshawar as well, and in both these incubation centers we have this partnership with the Founder Institute. और बहुत अच्छा चल रहा है, वो बहुत ही अच्छी, it's US based, it's a global company. Founder Institute के एक नाम है, उससे एक अच्छी, and then that's a good learning experience for some of the startups, and I still believe that's a very good program. लेकिन हैदराबाद में हमने एक और एक्सपीरियंस किया, एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो ये है कि हम एक पाकिस्तानी लेड कंपनी है जिसका नाम है आइडिया जेस्ट, और वो हमें, दे आर आवर करिकुलम पार्टनर्स. आइडिया जेस्ट इज द करिकुलम पार्टनर ऑफ NIC हैदराबाद. और हमारा इस वक्त स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज इसलिए है क्योंकि जहां फाउंडर इंस्टीट्यूट एक एक्सेलरेटेड स्टार्टअप्स या मैच्योर स्टार्टअप्स को फोकस करता है, विच इज द राइट थिंग टू डू. जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ मिक्स बैग आएगा, वेयर यू हैव सम ऑफ द वेरी एक्सपीरियंस स्टार्टअप्स, बट एट द सेम टाइम आइडिया स्टेज पे या अर्ली स्टेज पे जहाँ बहुत सारा आपको आइडियाज आ रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ आपको ट्वीकिंग करना होता है, रीडिफाइन करना होता है, विजन अपना गोल सेटिंग करनी होती है, वो भी जरूरी है. सो हमारा करिकुलम भी इसी तरह, हमारा करिकुलम के आप समझे, इट हैज 5 पार्ट्स and starts from the germination stage and up to the accelerate stage or the acceleration stage, जिसमें germination, pre-incubate, incubate, post-incubate, and then you have this acceleration. यानी आप एक आइडिया को facilitate कर रहे हैं, इसको enable कर रहे हैं, और उसको फिर incubate करके eventually आप उसको accelerate या growth की तरफ ले जा रहे हैं. So curriculum भी इसी तरह focused होगा, intensive program होगा, जहाँ आइडिया ये है कि सिर्फ मेन जो कोर टॉपिक्स हैं जो कि बहुत जरूरी हैं वो भी होंगे, बट 1-to-1 मेंटरिंग और कोचिंग भी होगी. सो जहां हम ब्रांडिंग, गो टू मार्केट, लीगल, टैक्सेशन, सेल्स स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें कर रहे होंगे. उसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि अगर फॉर इंस्टेंस देयर
देयर इज एन ई कॉमर्स स्टार्टअप और उसको मेंटरिंग की जरूरत है, तो हम कोशिश करेंगे कि ई कॉमर्स के जो जायंट्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो उनके साथ पेयर करें, बात करें। और वो क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ स्कूल का एक एस्पेक्ट नहीं होता कि एक आप उसको स्टार्टअप बहुत कुछ मांगता है। स्टार्टअप जो है वो डे टू डे अपनी कोई ना कोई आइटरेशन भी कर रहा होता है, उसको जो पुराने लोग एक्सपीरियंस होते हैं उससे सीखना भी होता है। तो ये एक बड़ा हमने उस तरह डिजाइन किया है कि द करिकुलम इज for the ideation companies as well and up to their acceleration level and all the steps that come in between. Perfect. अच्छा, so biggest challenge जो मेरे ख्याल से शुरू में स्टार्टअप्स के लिए होता है, that's generating finances, right? Capital कहाँ से? तो आप किस तरह से फिर फैसिलिटेट करते हैं उनको, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में कोई इस तरह की फैसिलिटीज भी नहीं है एज सच कि कोई एंजल फंडिंग या क्राउड फंडिंग के कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा नहीं है। तो किस तरह से आप वो करेंगे प्लान? देखिए जो 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 स्टार्टअप फंडिंग है ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड एज यू हैव मेंशन्ड, बहुत टफ है। और अगर हम आप डील्स भी देखें जहां जहां एकदम स्टार्टअप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पिछले 2-3 साल में वी हैव अ लॉट ऑफ डील्स, लेकिन अगर आप उसका टोटल नंबर देखें तो आप कहेंगे कि यार ये तो शायद 50, 60, 100 इस कंपनीज पे ही रुक गया। एंड द टिकट साइज, probably some of the startups might just be needing $100,000 or $200,000, उन्हें शायद $1 million की जरूरत ही ना हो। हमने ये करना है और हम जैसे मैंने पहले कहा था कि हम रियलिस्टिक होकर चीजें सोचेंगे। हमने ये करना है कि जाहिर है जब स्टार्टअप ग्रोथ की स्टेज पे आएंगे तो उनको ज्यादातर कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और इन्वेस्टमेंट इट कैन बी थ्रू VCs, इट कैन बी थ्रू एंजल इन्वेस्टर्स, इट कैन बी, पाकिस्तान में आपको पता है यूजुअली IPO तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उस फ्रीक्वेंसी से नहीं होता IPO, लेकिन फिर भी ये भी एक मेथड है। एंड देन यू हैव प्राइवेट इन्वेस्टर्स एज वेल, और बहुत सारी तरीके हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट आती है। हम ओपन रखेंगे इनको, हम उनको इन्वेस्टर रेडीनेस और अब उनका फोकस इस पर जरूर करेंगे कि दे आर इन्वेस्टेबल एज वेल। एट द एंड ऑफ द डे उनका इंटरेस्ट स्टार्टअप्स में तभी होगा इन्वेस्टर्स का जब उनको कोई इंटरेस्ट लगेगा उसमें। तो हमारा तो काम ये होगा कि उनको इन्वेस्टमेंट रेडी करना है। बाकी गारंटीज तो हम नहीं दे सकते, जाहिर है वी डोंट हैव अ फंड ऑफ आवर ओन। Ignite is restructuring and organizing a fund for some of the startups. वो अभी बाद में वो जब अनाउंस करेंगे उसको ऑफिशियली तब होगा उस हिसाब से। बट हम जितने भी इंक्यूबेटर्स हैं, वी डोंट हैव अ फंड ऑफ आवर ओन। यस, LMKT इन्वेस्ट इन सम ऑफ द स्टार्टअप्स, वो खुद भी करती है, प्राइवेटली भी करती है, NIC स्टार्टअप्स के साथ भी काम करती है। एंड देन आउटसाइड सम ऑफ द स्टार्टअप्स में भी LMKT एक क्रिटिकल रोल है। देन वी हैव आवर पार्टनर PTCL जो कि इंटरेस्टेड होगा स्टार्टअप्स में। एंड देन द एंटायर इकोसिस्टम इज आल्सो ऑब्वियसली उसके हमें क्या काम करना है, एक तो हमें उन्हें इन्वेस्टर रेडी कराना है, एंड देन वो हम कराची में भी कराते आए हैं और दूसरे NICs भी कर रहे हैं। रूटीन में उनके डेमो डेज एंड इन्वेस्टर समिट्स करा रहे हैं। जितना वो पिच करेंगे, जितना वो इन्वेस्टर्स से मिलेंगे, उतना उनका माइंडसेट जानेंगे। तो we want to organize periodic investor summits as well as demo days for these startups so that they have this investor interaction. I think so ये हमारा key focus है। Yes, we don't have a fund of our own, so वो वाला हमारा element नहीं होगा, but yes, connecting them, directing them to investors, helping them pitch, helping them have their documents and vetting them with some of the experts. ये काम हमारा सारा होगा और ये हमें करना भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये बात बहुत ऑब्वियस है आई थिंक कि पाकिस्तान में मेंटरिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। तो कंसिडरिंग दैट, how do you plan on being a liaison between local entrepreneurs and businesses? मतलब ऑब्वियसली एक ये ज़रूरी चीज़ भी है क्योंकि पाकिस्तान में कोचिंग की भी सख्त ज़रूरत है और उसी से फिर फ़ायदा होगा सारे स्टार्टअप्स को और बिजनेसेस को। एक बहुत फ़ायदा हुआ कोविड से कि हम लोग सारे जो है ना, जिस तरह अभी भी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ऑनलाइन, all these online platforms have really helped
in this regard as well. उससे फायदा ये हुआ कि if someone is for any reason they can't travel to Hyderabad, we plan to organize these virtual one-to-one meetings or for that matter group meetings. और mentoring जो है वो जाहिर है ऐसे लोगों से करानी है जो उनसे connect हो सके. पाकिस्तान में आप जैसे बता रही थी बिल्कुल सही है. हम ये नहीं, हमारा मॉडल में भी ये नहीं होगा कि ये वन ऑफ नहीं है, कोई आया एक दफा उसने बात की और वो चला गया. मेंटर तो वो है जो ताल्लुक रखे है स्टार्टअप से, unless they have this bond or this relationship of constant जिसमें इंटरैक्शन रहे, इसके अलावा वो मेंटरिंग हो नहीं सकती, क्योंकि ये वन ऑफ नहीं होता. ये आप उसकी जब तक डे टू डे जानते नहीं है और अगर आप उसको बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं दे रहे, लेकिन एक ऐसी अरेंजमेंट जरूर है जिसमें उसकी अपडेट्स आपको मिल रही हैं, तो दिस इज हाउ यूजुअली स्टार्टअप्स को फायदा होता है. व्हेन दे हैव दिस इंटरैक्शन, फीडबैक मिले, उस पर वो काम करें, देन दे गिव अ फीडबैक, खुल के बात करें, दोस्ती हो. दिस टाइप ऑफ मेंटरिंग वी रियली वांट. वो रेयर है और वो उसकी जरूरत भी है. बट हमारे अपने मेंटर पूल में इस तरह के लोग जरूर हैं who are industry giants and leaders who have really opted in to be part of our mentorship panel. So they really want to help these startups and the startup community. So we will have those interactions and those sessions with these mentors. अच्छा सर, ये बताएं कि NIC हैदराबाद आप लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो obviously there's a whole team of people working on this initiative, right? So how important do you think the company culture is, और इसको आप किस तरह से प्लान करते हैं कि आप मेंटेन कंपनी कल्चर को? जी, so to start with, we are all LMKT team members. Right. And importantly ऐसा होता है कि from the CEO, Mr. Atif Raiswan, who is the CEO of LMKT, to our senior management, जो खास तौर पे NIC में बहुत ज़्यादा जिनका रोल भी है, involved भी हैं, Faisal Jameel, he is the EVP at LMKT, and then the functional heads at LMKT, जैसे हमारा marketing में we have Sana Wafa, she's heading the LMKT marketing. और वो फिर एक बड़ा अच्छा, क्योंकि we are away from the head office but at the same time very much part of the company. Culture इस तरह आया हुआ है कि आप जहाँ जो लोग हैं वो independently अपना काम कर रहे हैं with guidance and constant relationship with the ground teams. So ये एक बहुत अच्छा एक कल्चर है जहाँ पे एक्सचेंज है, जहाँ constant बातचीत है. और फिर यहाँ पे NIC में NIC हमारा सारा जो है ऑपरेशंस की टीम हो, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की टीम हो, प्रोग्राम की टीम हो, एंड देन उनके साथ उनकी मार्केटिंग की, डिजिटल की, ये सारे लोग जो है ना मिल के काम कर रहे हैं. सो कल्चर जो है वो बहुत ही जैसे स्टार्टअप्स का कल्चर होता है, हमें भी वही कल्चर रखना है. लेस ब्यूरोक्रेटिक एंड मोर टास्क ओरिएंटेड, मोर फोकस, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ काम करें. हमारा बिल्कुल भी ये कल्चर नहीं है ये जिसमें हम बहुत दूर तक ब्यूरोक्रेटिक, बहुत मुश्किल मुसीबत में पड़े. वेरी फ्रैंक, ओपन, ग्रोथ माइंडसेट, रियली ओपन फॉर एवरीवन. और उसमें खास तौर पे ये है कि जितने से जितना इंटरेक्शन हो सके, टास्क ओरिएंटेड हो. दिस इज द कल्चर वी होप कि हम इस तरह. Perfect. Sir, given the political circumstances of today, I think हमारी youth काफी distracted है. So what are some ways that they can stay focused on their careers? और आप क्या advice करना चाहेंगे for young entrepreneurs जो बहुत helpless feel करते हैं या बहुत initial phases में हैं अपने to start a business? तो आप उनको advice क्या करना चाहेंगे और how can they overcome their you can say distract जो वो हुए में इतना ज़्यादा, वो इसको कैसे कर सकते हैं? I think so, जो biggest के लिए सबसे बड़ा फायदा किया है ना टेक्नोलॉजी ने और डिजिटल ने, वो आप किस बैरियर्स कम कर दिए. और बैरियर्स इस तरह कम किए हैं कि ये फ्रीलांसिंग के थ्रू हो, स्टार्टअप्स के थ्रू हो, आप एक you're just
आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, और एक या तो स्मार्टफोन की या अपने आप को एक सिस्टम की जरूरत है, लैपटॉप हो, आपकी टैबलेट हो, और आपने जो है वो काम करना शुरू कर देना है। सो जो यूथ है ना, उसके पास एक बहुत अच्छी उस डिस्ट्रैक्शन से दूर होने का एक सबसे अच्छा मौका ये है कि दे आर इंस्टेंटली कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, ग्लोबली क्या हो रहा है, और उसको देखते हुए दे कैन प्लान देमसेल्व्स कि वो दुनिया भर में क्या काम हो रहा है, दुनिया कितनी आगे जा रही है, और हमें उस तरह फोकस करना है। और मेरे ख्याल से स्टार्टअप्स के लिए भी, और इमर्जिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फॉर दैट मैटर यंग प्रोफेशनल्स, आई थिंक सो उनके लिए सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, डिजिटल चैनल्स के थ्रू बहुत ज्यादा एक तो ना सिर्फ कमा सकते हैं, बल्कि उसके उनके पास दे हैव अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। यस, देयर आर डिस्ट्रैक्शंस, but I think so the focus is easier now since वो उनको पता है कि चलो उनके पास, मेरे हिसाब से उनके पास इनकम स्ट्रीम्स बढ़ गई हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज इवन शायद आज हम देखें तो स्मार्टफोन्स 10 साल 12 साल पुराना फिनोमेना है। इंटरनेट आपका 4G 5G जो हुआ है, तो ये सारे 3G ऑनवर्ड्स, तो ये आपको फायदा ये हुआ ही इसलिए कि आपको आपकी ग्लोबल कनेक्टिविटी बेहतर हो गई। सो आई थिंक सो विद ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस वो फोकस होके, और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आजकल जो है वो इन सारे स्टार्टअप्स ने डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, डेफिनेशन ऑफ लीडर कौन होना चाहिए, ये सब चेंज कर दिया है। स्टार्टअप्स हैव चेंज द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। उम्र का फर्क, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आप नहीं कहते कि यार आप 28 साल के, आप सीईओ कैसे हैं, आप उसका काम बता रहा हो। सो ये सारी चीजें इंकरेजमेंट करने वाली हैं, और डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने के लिए सबसे आसान चीज मेरे हिसाब से यही है कि एक्सप्लोर द वर्ल्ड। पाकिस्तान में अगर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी तंग हो रही हैं किसी भी वजह से, तो आप अपना अगर स्टार्टअप है तो ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसकी ग्लोबल आउटलुक हो, और अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी अनकनेक्टेड होते हैं। अगर आप जॉब मार्केट में भी हैं तो आप अपनी कंपनी के अंदर बाहर की बेस्ट प्रैक्टिसेस या बाहर की चीजें ला सकते हैं। आई थिंक सो फोकसिंग ऑन वर्क एंड हैविंग ग्लोबल माइंडसेट इज इजियर नाउ। सो मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शन का जवाब ये है। Thank you so much, sir, for your time, and it was a real pleasure to have you with us. We wish you the best of luck. So this was us in conversation with Mr. Syed Azfar Hussain, the project director of NIC Hyderabad. This is me, Okasha, and my co-host Sabah, signing out. Until next time, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz.